आप इसको एक इत्तफाक देखें कि आप आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, जो कि हर साल वो मनाते हैं। आज ही के दिन 1947 में जब हिंदुस्तान की फ़ौज गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई थी, तो उस हवाले से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी हर साल आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और आज ही के दिन जो गज़ा में, फ़लस्तीन में, जो इसराइल ने इस वक्त एक वहशियाना बमबारी का सिलसिला पिछले 10 दिनों से शुरू किया हुआ है, जिसके नतीजे में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, नहित्ते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पता नहीं कितने हज़ारों ज़ख्मी भी हैं। सही फिगर्स तो अभी तक दुनिया को मालूम ही नहीं। गज़ा का वो शहर एक मलबे का ढेर बना दिया गया है। दुनिया तमाशा देख रही है और इसको बदकिस्मती से अमेरिका और दूसरे जो एलाइज़ हैं इसराइल के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो इसको एक सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर इसराइल को उसका हक करार दे रहे हैं। अभी जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये मसले कितने अहम हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, ज़ाहिर है सिमिलैरिटीज़ इसलिए भी हैं कि दोनों जगह पर गासबाना कस्बा है। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जगह पर मुसलमान आबाद हैं। फिर उससे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जगह पर जो डायरेक्टली इसमें प्लेयर्स हैं, इसराइल और हिंदुस्तान, इन दोनों को अमेरिका समेत वेस्टर्न कुछ मुल्कों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमायत भी हासिल है। और एक सिमिलैरिटी इससे बढ़ के ये भी है कि दोनों जगहों पर पिछले 7 दहाइयों में लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इस पाकिस्तान का इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। हम अपने स्टैंड पर आज भी कायम हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने जुल्म सितम के बावजूद, 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी आज भी ना मकबूजा कश्मीर के वो बहादुर रहने वाले वहाँ के अवाम और ना ही फ़लस्तीन के बहादुर बसने वाले अपनी अपनी कौज से, अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार हैं, ना वो हथियार फेंकने को तैयार हैं। दुनिया चाहे उनकी किसी तरीके से मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दुनिया को समझने की ज़रूरत यह है कि कश्मीर भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगों का बायस बन चुका है। और आज भी यह खित्ता एक कशीदगी का गढ़ है। आज भी पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दुनिया का सबसे हेवली मिलिट्राइज जोन है। और इसी तरीके से आज भी फ़लस्तीन का इलाका और वहाँ पर बसने वाले इसराइल के जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं। दोनों जगह ये जो इसराइल हो या हिंदुस्तान हो, इनकी जो वहशियाना जो कार्रवाइयाँ हैं, जो वहशियाना वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, वो उनके जज्बा हुर्रियत को तो दबा नहीं सके। लेकिन ये दोनों जो इलाके हैं, दोनों खित्ते हैं, बहरहाल ये दुनिया जहान में मज़ाहमती तहरीकों को एक कॉज आज भी फराहम करते हैं। बिल्कुल, दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है। तो ये तो आप ब्रिगेडियर साहब बहुत अहम बात की, जो आखिर कॉज फराहम करते हैं हुर्रियत की उन तहरीकों के लिए। लेकिन इस पर बुनियादी तौर पर दुनिया में जब भी बात होती है, मुकदमात बात होती है, वहाँ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज़ अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हाफिज़ साहब। लेकिन मामला ये है कि ये जब भी बात होती है तो दुनिया में तस्फिया अब जंगों से नहीं होते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, सलामती कौंसिल की करारदादें, वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो जेनोसाइड हमें नज़र आ रही है कश्मीर में पिछले 75 साल से। और उसके बाद जो है वो किसी तरह भी बात कानून, आइन, इंसानी हुकूक, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ कश्मीरियों का भी फिर वही मुकद्दर है जो हम देख रहे हैं आज मुस्तकबिल में। अब सबसे हम राब्ता करते हैं और 27 अक्टूबर इंसानी तारीख़ का ये स्याह तरीन दिन है, जिस दिन में हम आज बात कर रहे हैं कि पिछले 75 साल से जब भारतीय फ़ौज ने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा कर लिया, उस वक्त के महाराजा हरि सिंह के कहने पर। और हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से। अच्छा, हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बीइंग अ लॉयर देखते हैं कि मामलात जो है वो मुकदमात की सूरत में बातचीत, टेबल टॉक, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना। लेकिन आज कश्मीरी जो हैं वो हम देखते हैं कि वो जिस तरह से अपना हक
अपनी जान देकर भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सपोर्ट उस तरह से जो आलमी ताकतें हैं वहाँ से वो नज़र नहीं आ रही हैं, तो फिर ऐसे में क्या इनका मुकद्दर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जो मुकद्दर है वो आज़ादी है और इन्हें आज़ादी मिलेगी, और उसके लिए दुनिया भर के जितने भी लोग हैं या हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं या उसके बाद जितने भी ह्यूमन राइट्स पे लोग बिलीव करते हैं या इंटरनेशनल लॉ पे बिलीव करते हैं, वो यही है कि कश्मीरियों का जो मुकद्दर है वो आज़ादी है। और आज़ादी वो है कि जिसका 1948 के अंदर इंडिया ने पहले अपने मुल्क के अंदर एक प्लज किया, जो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने लगे थे उसके अंदर इसका स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर किया, और साथ ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस आई, जिसके अंदर रेजोल्यूशन नंबर आई पहले अप्रैल के अंदर आई, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन नंबर 47 है 1948 की, जो 21 अप्रैल 1948 को जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अप्रूव की गई। और उसके अंदर 3 चीजों का वादा किया गया जो कश्मीरी से। एक, सबसे पहले ये वादा किया गया कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और डिस्प्यूटेड एरिया जो है उसका फ्यूचर जो है वो डिटरमिन करेंगे कश्मीरी खुद करेंगे। उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सपोर्ट करेगी उन्हें, और एक अपना मिशन वहां पे भेजेगी। और उसके बाद उन्होंने अपॉइंट भी किया वहां पे एक एडमिरल को कि इस सारे प्रोसेस को वॉच करे, और उस दौरान जो था एक सीज फायर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। अब इसके अंदर ये है जो 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ये है कि बावजूद इस चीज के कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसने दुनिया के हर मुल्क के अंदर जाके अपनी रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो सैंक्शंस के अंदर गया है, उसके बाद उसने उस मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पे लगाया है, उसके लोकल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स उसको रोका है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के मामले के अंदर जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं है। और इसके ऊपर सिर्फ एक रेजोल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर 7 यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कि कश्मीर डिस्प्यूट को डिसाइड किया जाए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडियन एट्रोसिटीज जो है उसको बार बार इसके ऊपर हाईलाइट कर 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सफर वहां पे हुए हैं, जेनोसाइड वहां पे है। उसके बाद ये आप बात पॉइंट है कि ये दोहरा मयार हाफ़ साहब जो आप बात कर रहे हैं वो कश्मीर के मामले पर है। हम मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त लाहौर में बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी की आज कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए एक रैली निकाली जा रही है जिसमें सिराजुल हक इस वक्त खिताब कर रहे हैं। गज़ा को दोबारा आबाद करने के लिए इक़दामात करे, और इस वक्त इस्राइली फौज ने गज़ा का मुआसरा किया है, खाना नहीं मिलता, पानी बंद किया है, बिजली की सहूलत ख़त्म है, दवाई की सहूलियात ख़त्म है। वहाँ जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के अपने घरों को जलाया गया। जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद है और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई सहाफ़ियों को शहीद किया गया, उनके घरों को जलाया गया। लेकिन जुल्म और जबर का ये सिलसिला हुनूस जारी है। मैं इसलिए आज लाहौर की माओं और बेटियों को और लाहौर के बच्चों को शाबाश देता हूं कि फ़लस्तीनी बच्चों के साथ ये गिनती के तौर पर आज आप लोग यहाँ जमा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना जेब खर्च जमा करके फ़लस्तीनी बच्चों को अतिया किया। आपने अपने खिलौने लाकर फ़लस्तीनी बच्चों को बेचने के लिए हमारी जिम्मेदारी लगाई। आपने अपनी माओं के साथ आकर ऐलान किया कि हम फ़लस्तीनी बच्चों के साथ खड़े हैं। मैं इस जज्बे पर आपको सलाम पेश करते हैं। फ़लस्तीनी बच्चे भी जन्नत की फूल है और आप भी जन्नत की फूल है। फ़लस्तीनी बच्चे आज आग में जल रहे हैं। इस आग को बुझाना और इन जन्नती फूलों को बचाना ये ईमान, गैरत और इंसानियत का तकादा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि दुनिया देख रही है, उस वक़्त तक इंतज़ार कर रही है कि जब आखिरी फ़लस्तीनी बच्चा भी खामोश हो जाए, शहीद हो जाए, इंसानियत ख़त्म हो जाए, इंसानियत वहाँ दम तोड़ जाए और आखिरी हिचकी भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने
फ़लस्तीनी बच्चों को, फ़लस्तीनी माओं को, फ़लस्तीनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना है। हम भी मुसलमान, हम भी मस्जिद अक्सा के मुहाफिज, हम भी क़िबला अव्वल के पासबान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी इसलिए कल 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने एक अज़ीम-ए-शान गज़ा मार्च कर रही है। इसलिए अमरीकी सफारत खाने के सामने हम गज़ा मार्च कर रहे हैं कि अमरीका इस जुल्म में 100% शरीक है। अमरीका ने जंगबंदी के करारदाद को वेटो किया है। अमरीका ने इसराइल को कत्लेआम की लाइसेंस दी है। अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजा है। अमरीका फौजी इमदाद दे रहा है और फलस्तीनी बच्चे मर रहे हैं और ये उनको मजीद तबाह और बर्बाद करने के लिए इसराइल को असला दे रहा है। मैं इसलिए कल इंशाअल्लाह अमरीकी सफारत खाने के सामने, अमरीकी सफारत खाने के सामने 29 अक्टूबर को एक अज़ीम-ए-शान गज़ा मार्च में शिरकत के लिए आप सबका इंतज़ार करूंगा। मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। बच्चों, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि ये बच्चे जवान होंगे। सिराजुल हक इस वक्त फ़लस्तीन रैली से खिताब कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के मामले के हवाले से। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मंसूर साहब, वो बड़ा अहम मामला है सफारती सतह पर, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो जंगों हथियारों से बहुत आगे चली गई हैं कि दूसरे ममालिक जो हैं वो सपोर्टिव कैसे हो सकते हैं। हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो सफारती सतह पर हमेशा पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, कश्मीर की बात हुई है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जब 5 अगस्त के बाद सूरत हाल भी, हैयत भी, कश्मीर का जो सारा डेमोग्राफी हो उसको चेंज करने की बात हो रही है, उसके बाद अब हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या हम कर रहे हैं? इस सिफारती सतह पर जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, सबसे पहली बात तो यह कि वर्ल्ड ऑर्डर अब तब्दील होना शुरू हो रहा है। जो गुज़िश्ता 75 साल से वर्ल्ड ऑर्डर था वो मामलात पे या कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म मुहैया करता था वो ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसमें जब तक दुनिया की बड़ी कुव्वतें, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं, 5 दुनिया यूनाइटेड नेशन कुव्वतें किसी एग्रीमेंट पर ना आए तो उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती थी। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा इसकी डोमिनेंस, या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत डोमिनेंस थी। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, और हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पैलेस्टाइन के इशू पे भी पेश हुई, उसमें चाइना और रशिया ने भी उन रेजोल्यूशंस को वीटो किया है जो अमेरिका की तरफ से लाई गई थी। तो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है। एक ब्लॉक या एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऐसा इकट्ठा हो रहा है जिसमें चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान को भी अब अपने कश्मीर के इशू के ऊपर मामलात को रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए इस तरह का रोल प्ले करना होगा कि एक तरफ तो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके मुताबिक आप अपनी एंगेजमेंट करें सिफारती सतह पर, इन तमाम कंट्रीज के साथ अपने रवाबित जो हैं, जो मजलूम की आवाज़ को उठाने का सबब बन रहे हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, टर्की, ईरान, ये सारा ग्रुप, इनके साथ अपने ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत करें, अपने इंटरेक्शन को ज़्यादा मजबूत करें। साथ ही जो एस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके साथ भी एक डिप्लोमेसी को कायम रखें। और जो आने वाले सालों में ये शिफ्ट मजबूत होती है, उस तरह से पाकिस्तान को अपनी नेशन की मजबूती की तरफ, अपनी इकोनॉमी की मजबूती की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जब नेशंस मजबूत होती हैं, इकोनॉमी मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है, तो उसकी आवाज सुने जाने के ज्यादा मौके होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सिफारती सतह पर एक बड़ी तब्दीली की जरूरत है, जो
जो कोल्ड वॉर के दौरान सिफारती सरगर्मियां चल रही थी, सिफारती एक्टिविटीज चल रही थी, वो शायद इनफ नहीं होंगी। अब हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ और ह्यूमन डिप्लोमेसी की तरफ, ह्यूमन राइट्स डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में है कि ये शिफ्ट आ भी रही है, लेकिन इस शिफ्ट को और ज्यादा तेजी से हमें अपने इदारों में, अपने स्ट्रक्चर्स में लाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान के लिए फाल तरीके से इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में रोल प्ले करना शायद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात की है। लेकिन एक जो चीज़ ब्रिगेडियर साहब हम ये देख रहे हैं कि मिलिट्राइजेशन जो है वो हमें नज़र आई है और बहुत ज़्यादा शदीद 75 साल में, लेकिन उसके बाद जब 5 अगस्त के बाद का जो मामला 2019 के बाद का है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी है। फिर डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज की जा रही है, मुस्लिम अक्सरियती आबादी जो है वो अब कम करके अक़लियती आबादी में तब्दील करने का जो अमल है, तो इसको रोका जाना बड़ा ज़रूरी था, इसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तो फिर अगले 1-2 साल में बिल्कुल जब डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी, फिर तो कश्मीर के हवाले से इस्तिस्वाब राय हो, कुछ मर्जी हो, वो भी अपनी मर्जी से करवा लेगा भारत। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की तो 5 अगस्त 2019 के बाद बदस्तूर कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियत है उसको इस तरीके से डीलिमिटेशन की जाए कि वो मुस्लिम अक्सरियत जो है वो उस तरीके से अक्सरियत ना रहे, और पार्लियामेंट में जो मकबूजा कश्मीर की नाम नहाद इंतखाबात उन्होंने करवाने हैं, वो ज़ाहिर तभी करवाएंगे, पिछले 4-5 सालों से नहीं करवाए हुए, कि जब वो समझेंगे कि इस वक्त कश्मीर की असम्बली में 78 सीट जो हैं उसमें अक्सरियत जो है वो उन लोगों की होगी जो या तो गैर मुस्लिम है या मुसलमानों में भी वो एलिमेंट है जो कि प्रो इंडियन है और बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अभी इसको बदौर शमशीर तो ज़ाहिर नहीं रोका जा सकता, लेकिन डिप्लोमेसी के ज़रिए ज़ाहिर है इंडिया पर प्रेशर डाला जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में ख़ासतौर पर 2019 5 अगस्त के बाद हमारी कश्मीर पॉलिसी कई हवालों से क्वेश्चनेबल रही है। शायद हम उस तरीके से मौसर तरीके से हिंदुस्तान को इस मामले पर प्रेशराइज नहीं कर सके दुनिया के फोरम्स के ऊपर। अभी जहाँ तक डेमोग्राफी का ताल्लुक है, सिर्फ इंडिया के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिशों से सब कुछ चेंज नहीं होने वाला। आपने देखा होगा गुज़श्ता हफ्ते कारगिल इलाके में जो गुज़र है वो भी एक मकबूजा इलाका है, उसमें इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो रिएक्शन तो डेफिनेटली आएगा। अब इस देखने के बाद यह कि रिएक्शन कितना होता है, वो रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उससे जो स्पेशली बीजेपी लेड जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट की गवर्नमेंट है, जिसमें अगले साल इलेक्शन भी ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं, वो तीसरी टर्म के लिए मोदी जो है ना, ही इज रनिंग फॉर दी प्राइम मिनिस्टरशिप, तो उसमें क्या इतना रिएक्शन आता है कि वो कुछ सोचने पर मजबूर हो। इंडिया के अंदर से आवाज़ें डेफिनेटली इस मामले में उठती हैं। कांग्रेस का अपना व्यू पॉइंट है, इंडिया की जो मेजर अपोजिशन पार्टीज है, मेजर अलायंस बीजेपी के अगेंस्ट बन रहा है इलेक्शंस में, तो बीजेपी के लिए भी इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। तो क्या वो अलायंस इतना स्ट्रांग होता है? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात उसमें होती है, इंडियन कोर्ट में भी ये मुकदमा ज़ेर समात है। बट विद इन मकबूजा कश्मीर मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि चीज़ें उतनी तेज़ी से ज़्यादा रिएक्शन मोड में नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। और राजन उसकी रीज़न सबसे पहले यही है कि शायद दुनिया ने तो कश्मीरियों को उनके हाल पे छोड़ा हुआ ही है, उनसे नज़रें मोड़ी हुई हैं। शायद पाकिस्तान ने भी, जितनी हमारी कश्मीर पॉलिसी ऑफेंसिव होती थी, ऑफेंसिव पॉलिसी का यह कतन मतलब नहीं होता कि आप मिलिटरली कुछ करें या तशद्दुद की तरफ जाए या कशीदगी की तरफ जाए। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने मौक़िफ़ को दुनिया के फोरम्स के ऊपर इतना उजागर करें, और हमारे पास कहने के लिए इतना कुछ है और हमारा मौक़िफ़ इतना असूलों पर मबनी है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कश्मीरी में ग्राउंड रियलिटीज़ है वो दुनिया को बताने की जरूरत है। हुकूमती सतह पर, सिफारती सतह पर ब्रिगेडियर साहब जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये मामला है। लेकिन अवामी सतह पर हम देखते हैं कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। और 27 अक्टूबर यौम स्याह के मौके पर इस्लामाबाद में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा तक रैली निकाली गई। एहतजाज में पाकिस्तान स्वीट होम्स के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान स्वीट होम्स के ज़मरुद खान के साथ हैं। क्या कहना है अनवर अब्बास बच्चों का और ज़मरुद खान का आज की रैली से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, आज 27 अक्टूबर यौम स्याह के मौके पर दफ्तर खारजा से एक बड़ी रैली का इनेकाद हुआ। कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। यौम स्याह के हवाले से भारतीय मज़ालिम की मजम्मत की गई। डी चौक में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्वीट होम्स के मारूफ शख्सियत ज़मरुद खान साहब। बताइएगा क्या जज्बा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं बोल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोल टीम ने
हमेशा मजलूमों का साथ दिया और कश्मीर के अवाम की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए आपका बहुत अहम रोल है। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज 27 अक्टूबर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हम मुसलमान हैं और बिलखुसूस पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती मनाते हैं कि जो ब्लैक डे का आगाज़ हुआ था कश्मीर के अंदर पिछले कई दहाइयों से, बल्कि अब तो सदियां गुजर रही हैं, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद करते हैं। और आज पाकिस्तान स्वीट होम के हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां उन बच्चों के साथ जो कश्मीर में पिछले कई दहाइयों से जुल्म से आ रहे इंडिया का आवाज़ बुलंद करने के लिए कि उन पर जुल्म भी बंद किया जाए और कश्मीर के बच्चों को और बच्चियों को वो राइट मिलना चाहिए जो पूरी दुनिया में बच्चों का राइट है। बिल्कुल, खान साहब का कहना था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये बच्चे खड़े हैं ना सिर्फ मजलूम कश्मीरियों के साथ बल्कि मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ, क्योंकि ये दोनों कौमें निशाना है जारहियत का। एक तरफ इसराइल है। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। मैं मंसूर साहब क्विकली आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत अहम बात की इक्तिसादी तौर पर। हम तो इक्तिसादी तौर पर वो मजबूत कौम नहीं है, लेकिन अरब कंट्रीज़ के जिस तरह भारत के साथ ताल्लुकात हैं, तो फिर वहाँ से भी सारी सपोर्ट जो कश्मीर को मिल रही थी वो बड़ी मध्यम सी नज़र आ रही है अब। जी देखिए, बात यह है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न पावर्स हैं और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसने मिडिल ईस्ट को बहुत शुरू से ही एक डिवाइडेड पोजीशन में रखा है। अगर आप पैलेस्टाइन के इर्द गिर्द जो अरब ममालिक हैं उनको भी देखें तो वो उनकी एक यूनिफाइड पोजीशन नहीं है अपने फलस्तीनी बरादर अवाम की रियासत के रियासती हकूक के लिहाज से, उनके इंसानी हकूक के लिहाज से। इजिप्ट अलहदा से डील करता है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ, जॉर्डन अलहदा से अपनी पॉलिसी परसू करता है, सीरिया काफी कमजोर हो चुका है गुज़िश्ता सालों में। सऊदी अरब में जो अब एक इकोनॉमिक रिवाइवल और एक जो इकोनॉमिक एजेंडे पे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ से सऊदी की क़यादत उसको लेके जा रही है। तो आपका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं मंसूर साहब, वो बड़ा अहम है कि उसमें अपने आप को भी मजबूत करना है, तब हम अपना भी मुकदमा बेहतर तौर पर लड़ सकते हैं। मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब के, हमने ये देखा जैसे ही कोई ऐसा दिन आता है उससे एक दिन पहले LOC पर एक नया माज खोलने की कोशिश होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी आप ये देख रहे हैं, दुनिया की तवज्जो हटाना मकसूद है ऐसा काम करके? जी जाहिर है, जब भी कुछ तरह का दिन आता है और कोई इस तरह की इवेंट आता है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से या मसला कश्मीर के साथ हो, तो हिंदुस्तान की फ़ौज बिला इश्तियाल फायरिंग करती रात को वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर सियालकोट के इलाके में बिला इश्तियाल उन्होंने फायरिंग की। और उस फायरिंग का ज़ाहिर है हमने भरपूर जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा देते हैं। फिर उनको मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन लोगों में खौफ रास फैलाने के लिए, दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं, ताकि जब हम इस तरह का दिन मनाते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह दिन जब मनाएंगे तो जब साथ सीज़ फायर की वायलेशन होगी, वर्किंग बाउंड्री के तकद्दुस को भी वो पमाल करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो इस तरह का काम वो नहीं कर सकते, तो उससे ज़ाहिर है दुनिया की तवज्जो उस तरफ आएगी। बट इससे उनको कभी कोई कामयाबी हुई नहीं है, इसलिए हरकतें हमेशा वो करते हैं। न सिर्फ इस तरह के दिन के हवाले से, वैसे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान का यौम आज़ादी हो या यौम पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी वो कामयाबी मिले तो वो LOC के ऊपर उनका यही काम होता है कि फायरिंग करके बिला इश्तियाल लोगों को एंगेज करना। बट डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से केपेबल है, इसका पता हिंदुस्तान को अच्छे तरीके से है। जब भी ऐसा काम करते हैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर उनको खामोश होना पड़ता है, लेकिन इस तरह की हरकतें करके वो इस तरह के दिनों की जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी अहमियत है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसको कम करने की एक मजमूम कोशिश होती है जो हमें माजी में भी नज़र आती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साबिक सफ़ीर हमारे साथ थे। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। 27 अक्टूबर 1948 को भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, जो आज तक जारी है। अक़वाम आलम ने कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत दिलाने के वादे किए जो आज तक वफा नहीं हो सके।
that Jammu and Kashmir is not integral part of India. It is a disputed territory, and for the permanent settlement, the Jammu and Kashmir people should be given right to self-determination so that they will decide their future. There is absolutely no democracy here. There is no rule of law here. There is no accountability here. It's not a secret that, the highest concentration of troops anywhere in the world is in Jammu and Kashmir. And these troops are not here to fight militancy, but they are here to fight the people. It has been a disputed territory in 1947, and it continues to be so, notwithstanding any amendment that is attempting to be made relating to Article 370. India has failed to, kill the spirit of the Kashmiri people. So the secret to it is our faith. It's like we're unflinching faith in God Almighty. The saga of Kashmiri's sufferings is spread over a period of more than 7 decades. It started with the landing of Indian Army troops in Jammu and Kashmir on October 27 in 1947. India on this day forcibly occupied Jammu and Kashmir against the will of the Kashmiri people. And in total disregard to the Independence Act, the territory's forcible occupation by India is based on an illegal instrument of accession signed on 26 October 1947 by Maharaja Hari Singh, who had fled to New Delhi fearing an uprising by the Kashmiris, who had wanted to accede to Pakistan in October 1947. International law tells us that if there is an instrument of accession, while you can in principle transfer the title, but if there is a contrary or a counter offer or a counter condition added to the instrument of accession by the Governor General himself saying this is subject to ascertainment of the wishes of the people of Kashmir, then that instrument of accession is not a complete document. It does not transfer title. And then the whole thing is taken to UN Security Council under the UN Charter, and Security Council reviews the entire dispute, the territory, the matters associated with that, the issues of Kashmiris, their rights, and comes out with series of resolutions. And these resolutions create a very clear lien of the UN Security Council and its connectivity with the Kashmir dispute directly. These resolutions, most of them, in my opinion, have been passed under Chapter 7 of the UN Charter, which means they are binding in nature. They have to be upheld. None of them has been withdrawn. None of them has been recalled. None of them has been repealed. So they still hold the field. They are a legal documentation of the UN Charter framework. And they give that right to the Kashmiris, that their right relating to the territory is subject to ascertainment of their will under the UN Security Council framework, which has not happened. Kashmiris never accepted Indian hegemony. There were always a struggle against the Indian occupation. It was a political struggle against Indian occupation always. But Indians always suppressed those political struggles in Kashmir for right self-determination by one way or the other way, putting the leaders into jails, killing the student leaders in different ways. From 1989 till date, nearly 97,000 people have been killed in Kashmir. You will see more than 10,000 people have been enforcibly disappeared in Kashmir. You will see the mass graves, unmarked mass graves in different parts of the Kashmir, numbering over 8,000 unmarked mass graves. Likewise, 11,000 women in Kashmir were either sexually harassed or they were brutally gang raped by the Indian army in siege and search operation and crackdowns in different ways. You go back in history, 1947, 48, the Jammu massacre, it was spearheaded by the RSS and the Dogra forces, and the same RSS is in power right now, and now internationally also how the HSS, their sister organization, is harassing, is attacking, is threatening Muslims of India and all those moderate voices of India, be it the Sikh community or even the Kashmiris that have families within Indian occupied Jammu and Kashmir, that they will attack their families. So the harassment, the torture or the threats level has it has expanded internationally. The Armed Forces Special Powers Act grants Indian security forces
wide-ranging powers in the region, and it has been often criticized for enabling impunity and inhibiting accountability. 2010, then in 2016, we had another uprising in Kashmir after the killing of the Burhan Muzaffar Wani, a young boy, a young Kashmiri boy, when Indians were trying to say that there's everything normal in Kashmir, there's no militancy, we have done away with it, and it's all done. That young kid, he used social media to challenge the Indian hegemony at that time, and he became a household name in Kashmir. After that, we saw that crowds of people coming out in length and breadth of Jammu and Kashmir to pay the homage to that young man. And at that time, Indians again used the brute force. Ballots were used shamelessly by Indians, and it was at that time when New York Times reported that it is the year of dead eyes in Kashmir. We saw that hundreds of people were blinded by those ballots. Thousands were injured by those ballots, and nearly 141 people were killed in that uprising in Kashmir, which happened in 2016. On 5th August 2019, Indian government led by Prime Minister Narendra Modi announced the abrogation of Article 370 and 35A of the Indian Constitution, revoking the special autonomous status of Jammu and Kashmir that allowed the state its own constitution, a separate flag, and independence over all matters except a few. Article 35A of the Indian Constitution granted the state government of Jammu and Kashmir the authority to define who qualified as a permanent resident of the state. The demographic changes which Indians are trying to do and trying to dislocate the population are absolutely in violation of international law relating to occupation. Occupation is a very specific regime where an occupying power sits in an occupying supervisory capacity over the local population. The law of occupation under IHL, which is international humanitarian law, is you cannot bring any demographic changes. You cannot deport local people. You cannot change the way they are managing their ordinary life. You cannot alter the currencies. You cannot bring any material changes. So occupying power has it is just taking care. It's a caretaker framework at best, which has an interim mandate, but it cannot undertake very important decisions relating to population, investments, and so on. And that is the reason why these moves, which have been done by the Indian side about changes of population and demography and change of halka bandi and so on, it is in violation of the law of occupation. The ruling party BJP plans to settle outsiders in Jammu and Kashmir, potentially leading to ethnic cleansing and the creation of new conflicts to control the demographic superiority of the Muslim population in the region. In the aftermath, the illegal Union Territory government issued a staggering number of domicile certificates, totaling up to 3.5 million, to outsiders in Jammu and Kashmir. They introduced nearly 200 the federal laws that were in India, not in occupied Kashmir. Those laws were introduced in Indian occupied Kashmir by these laws and by other amended laws which were amended. Those laws which are amended and introduced, it counts about 800 laws and rules which were regulations which have been done there. And these were all done to, one, to change the demographic of Jammu and Kashmir. They issued the new domicile certificates to the non-residents, and at that time nearly 1.7 million Indians were eligible for that. That means 1/4 of the population of Jammu and Kashmir was eligible at that time. And then they gave also to the Indian Armed Forces the same right. So when the Indian Armed Forces, you will know already more than 100,000 Indian Armed Forces are there. If they are allowed to do it, it has already changed the demography in Kashmir. And again, we can see that delimitation. First was the issuing the domicile certificate, then they did a delimitation. They established a delimitation commission, which was again illegal because Indian Parliament, its own constitution, has restricted the constitution of delimitation till 2026. But again, the Indian government did it only for the Jammu and Kashmir, taking away the natural resources of Kashmir. Already
each and every natural resources for which extraction of natural resources, all those goes to the Indian companies, not to the local Kashmiri companies. And they gave them right to purchase the property. It's like the same way they will purchase the property, they will have now the right to have the jobs over there, scholarships there, and this is in other way a settler colonialism. One of the things that they've done is they have begun to expropriate agricultural properties, agricultural lands that have long been the ancestral homeland of tribes, of the Kashmiri tribes. And the Indian Army has now begun to expropriate these lands for long-term, not buying them, expropriating, for long-term military installations, shooting ranges, for garrisoning its troops, for intimidating and terrorizing the population. The abrogation of Article 370 has also had a significant impact on the region's economy and employment prospects. The unemployment rate has surged to 16.2%, as reported by the Center for Monitoring Indian Economy, which is more than double the unemployment rate of the Indian Union, which stands at 6.7%. The economic repercussions have been acutely felt by the people of Jammu and Kashmir, with around 500,000 people losing their jobs following the revocation of the special status. The way Kashmiri people are not just being killed, shot, raped, abducted, imprisoned, but at the same time their economic rights, their right to ownership, everything has been snatched. So naturally the RSS brigade and the fascist regime of India, what suits them right now, looking at the poverty within India, that there's no food on the table, the only thing which can win maximum anti-Muslim and anti-Kashmir votes is by using the religious card, and it plays really well for them both ways if you look at it. But when you want to sever a relationship which has been entered into, you must ultimately seek the opinion of the people. Because people are central to this decision, not the Union of India. It goes counter to the very grain of Article 370. Recently, an Indian Supreme Court bench has asked the Narendra Modi-led government about the time needed to restore statehood of occupied Jammu and Kashmir, as enshrined in the country's constitution. The most persuasive voices against 5th August 2019 presidential order are coming from within India. And no wonder the Indian petitioners and the lawyers have taken the matter to Indian Supreme Court. And if you recall the hearing of that Supreme Court proceedings, you will recognize there are very cogent arguments being pleaded by those who are challenging 5th August 2019 presidential order on the grounds that it is ultra-vires, even the Constitution of India. We from the outside, as a state of Pakistan, and everybody else, thinks it is in violation of international law as well. So then there are two tiers of illegality. Under domestic Indian law, which is the Constitution of India, it is a violation. And then under international law, there is an outright violation because there is a UN resolutions under the UN Charter, and they need to be upheld. And if at all you want to do any development relating to any aspect of this matter, you have to approach the UN Security Council, which India has not. More than 20 petitions were filed questioning the constitutional validity of the Indian government's August 2019 decision to abrogate Article 370. History of the Indian Supreme Court, Indian courts to the Kashmiris is witness to it. They have never been fair to the people of Kashmir. We have seen the case of Maqbul Bak, how he was handled. Then we have seen the case of Afzal Guru, how he was handled. Afzal Guru, an innocent man, just make a scapegoat for it, and the Indian government, Indian Supreme Court at that time, in their verdict said that though there is no prima facie evidence against him, but we are giving him the highest to satisfy the general conscience of the Indian public. So the Supreme Court is satisfying
the general conscience of the Indian public not satisfying the justice, not the rule of law. One thing which is very positive about them, that no matter what they go through, they never give up on their birthright. That is something where India has been miserably defeated. No matter what they do with our Lal Chowk or whatever, you know, they're trying to change the dynamics, but the sentiment has never died down. We need an urgent resolution being tabled from the UN to stop this demography changes and to conduct a fresh population census over there. The Indian-controlled Kashmir stands at historical moment. Kashmiris have demonstrated that they reject India's control over their territory. Indian military presence in Kashmir may have helped it to control the territory, but it has also invalidated its claim to it. और तमाम तर जुल्म के बावजूद कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी उनका साथ दे रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Hi girls, I love going out, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए Palmolive Naturals मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। Hi girls, I love going out, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए Palmolive Naturals मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। Hi girls, I love going out, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए Palmolive Naturals मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. Hi girls, I love going out, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए Palmolive Naturals मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। खबरों का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 बुलेटिन्स का सबसे मुनफरिद नाम बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। एक ऐसा बुलेटिन जिसे देखता और जानता है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स ही है हर पल लाइव। सबसे बासलाहियत चेहरे जो रखे आपको हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। बुलेटिन की दुनिया की सबसे काबिल टीम, ये है बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स, सिर्फ बोल न्यूज पर। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। This hourly clock is brought to you by रोज लगाओ स्किन परफेक्ट बनाओ। फेमिनिस्ट, लोग तो नोटिस करेंगे। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा। भारतीय तसल्लुत के 76 बरस, दुनिया भर में यौम सियाह, कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ एहतजाज, रैलियां और सेमिनार।
1947 में भारत ने फौजें उतारी, दुनिया वादों के बावजूद हक के खुद इरादियत ना दिलवा सकी, मजालिम आज भी जारी, सैकड़ों शहीद।